Thank you, Tuhin. While a lot has happened in the last 9 years, some of the things that have happened have also not been very positive in some ways, but we will come to that later. Uh, I have to just, we only talk about achievements. We have to also think of the fact that we somehow like to indulge in hype also. So I'll come back to you later, but let me get to Arun Anand first. What is your understanding of being a global superpower? What do you think is going to be the driving force behind India emerging as a superpower? देखिए, मैं हिंदी में बोलूं तो चलेगा ना? बिल्कुल, दौड़ेगा जी। मुझे लगता है कि जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है, उसमें ग्लोबल सुपर पावर का एक्चुअली सुपर पावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट रहा है, और लेकिन आई गेट द सेंस बेसिकली कि हम ग्लोबल सुपर पावर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दुनिया को बेसिकली वी कैन लीड द वर्ल्ड एंड वी कैन लीड द वर्ल्ड टू अ बेटर सिचुएशन। तो पहली बात तो ये है कि ये जो ग्लोबल सुपर पावर वाला डिक्टम है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वेस्ट में सुपर पावर का कॉन्सेप्ट है लीड करने के लिए तो हमारा भी सुपर पावर का कॉन्सेप्ट हो। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम वाकई दुनिया को रास्ता दिखाना चाहते हैं तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि हमारे पास जो है द काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी विच वी यूज एंड द काइंड ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स विच वी हैव, हम भारत को एक नेशन स्टेट के, जब ग्लोबल सुपर पावर की बात करते हैं तो हम भारत को एक नेशन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारत का जो नेशन स्टेट का कॉन्टेक्स्ट है वो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए, वो एक वेस्टर्न फ्रेमवर्क है। यूरोप में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद जो है वो नेशनलिज्म का उदय हुआ। उनका जो नेशनलिज्म का उदय था और हमारा जो राष्ट्रीयता का जो उदय है वो बड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली जो है नेशन और राष्ट्र जो हमारा शब्द है उसका कोई इक्विवेलेंट अंग्रेजी में है ही नहीं। नेशन जो है, मैं आपको एक फंडामेंटल डिफरेंस बता रहा हूँ बेसिकली, जो है कि हम जो है वो एक राष्ट्र हैं, हम एक नेशन स्टेट नहीं है। और राष्ट्र का मतलब ये है कि हम कुछ सिविलाइजेशनल वैल्यूज को जो है वो एडहेयर करते हैं, उन सिविलाइजेशनल वैल्यूज को जो है वो लेकर जाते हैं। और यही कारण है जब भारत का जो सुपर पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट से बहुत डिफरेंट है, इसलिए कि वेस्ट में जब कोई कंट्री पावरफुल हुई है उसने दूसरी कंट्री को कोलोनाइज किया है या दूसरे लोगों पर आक्रमण किया। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई इतिहास में ऐसा जो है आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि जब भारत ने दुनिया के किसी भी अन्य देश के ऊपर जो है वो आक्रमण किया हो। भारत ने जो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट किया एक अपने जो है वो जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं या सिविलाइजेशनल वैल्यूज जिन्हें आप सभ्यतागत मूल्य कहते हैं, उनके माध्यम से। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि दुनिया में जो आपको सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कहाँ मिलता है, वो भारत में नहीं है, वो कंबोडिया के अंकोर वाट में है। तो ये भारत का जो है सांस्कृतिक जो है ना इन्फ्लुएंस का जो है वो या कल्चरल इन्फ्लुएंस का जो है वो स्फीयर है। सो मुझे लगता है द rise of India as a global superpower should be seen in context of not in terms of increase of GDP, not increase in terms of military power, but in terms of the kind of influence we can have on the rest of the world in terms of spreading our civilizational values. Thank you, Arun. See, आप सही कह रहे हैं, सांस्कृतिक लीडर होना, विश्व गुरु होना, सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं आप। देखिए ये जो सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ये सारी वेस्ट की टर्मिनोलॉजी है। प्रॉब्लम ये है कि हम भारत को भारतीयता के संदर्भ में, मैं अभी आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं दे सकता क्या होनी चाहिए, पर मेरा सिर्फ आग्रह ये है हम कोई भी बहस करें या कुछ वो करें उसमें जो है जो टर्मिनोलॉजी है वो तो हम कम से कम भारतीय संदर्भों वाली इस्तेमाल करें। टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो, फैक्ट्स और फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अलग होगा, हमारा कॉन्सेप्ट अलग होगा। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम सबको रास्ता दिखाना चाहते हैं, पहले हम तो सही रास्ते चले वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, सो फिगर्स के ऊपर हम अगेन बाद में आएंगे। पहले एक बार मैं कस्तूरी जी से पूछूं, यू आर एन एक्टिव जर्नलिस्ट, हाउ मच डू यू थिंक इज हाइप एंड हाउ मच इज द रियलिटी behind the superpower story?
I believe the reality, to be very honest, is more than the hype. And if you ask me, being a journalist, I honestly believe that the kind of India in the last 76 years or India in the last 25 years, I believe we have actually done something really big, and it's not only about hype. Because starting from, I'm not saying that it's from 2014 onwards, I'm saying if you see the last 25 years, the amount of growth or the amount of development in every index possible, I think everything has given us a positive side to whatever is happening. So it's not only that it's about a hype, and even if it's about a hype, what's wrong about a hype? I mean, if it's a hype, aren't we all doing hypes in our own fields? Aren't we all speaking about our own work? Aren't we doing a lot of propaganda about our own books that we write? Are we not talking about our books? So if a country is doing good, and if a country is talking about it, if its people are talking about it, why should it be termed as something out of the world and a hype? Okay. So you feel there is more truth than hype? Yes. Okay. Well, we need to come to an agreement on that. Let us at least first come on a common ground. Let us first see, are we even talking about the same thing? We have not yet come to a description of a superpower, and we're going to be discussing whether we are going to become a superpower or not. Let me just read a description. It is not my description, it is a description in many places. Superpower describes a state or a supranational union. A supranational union being something like the European Union, that holds a dominant position characterized by the ability to exert influence or project power on a global scale. Are we anywhere close to that? Next, a superpower nation is one that generates a disproportionately high influence on the other nations because of its military, economic, technological and cultural strength, as well as diplomatic and soft power. ये सब अंग्रेजी की डेफिनेशंस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको अप्लाई नहीं हो सकती, इनको हम हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं. So my question is only this: where are we anywhere close to this if we go down to figures and facts? Tuhin. Why do we need to take these definitions very seriously? You know, if they are Western concepts, the So fact is, I think एक हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है. G20 समिट के दौरान जो भारत की उपलब्धियां थीं, हमने पहली बार G20 में पूरी अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया. कोई इससे पहले करा पाया था? नहीं करा पाया था. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो कि विश्व को एक नया सप्लाई चेन रूट देने वाला है, उसको हमने अंजाम दिया, which more than adequately has neutralized China's redundant or China's obsolete BRI. ये अलग बात है कि जिस दिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की घोषणा हो रही थी, तो हमारे एक नेता ब्रसल्स में बैठकर चाइना की BRI की तारीफ कर रहे थे. तीसरी बात, हमने पिछले कुछ वर्षों में विश्व को सोलर अलायंस दिया, बायोफ्यूल अलायंस दिया G20 के समिट. I mean, I'm sure everybody realizes the importance of sustainable development and the importance of these alliances. So I think, when you see things happening right in front of your eyes, I don't think we should confine ourselves to theoretical definitions which don't hold, much importance in the practical world. So, Arun ji, आपकी definition क्या होगी सुपर पावर की? देखिए, मैं तो सुपर पावर के कॉन्सेप्ट से कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ही नहीं हूँ. मुझे लगता है कि सुपर पावर का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, बट बहरहाल जो तुहिन जी ने बात कही और जो आपने कहा, चलिए मैं अगर इस डेफिनेशन को मान भी लूँ, या मैंने जैसे कहा कि भाव इसमें ये है, शब्दों पर नहीं जाते, भाव इसमें ये है कि भारत जो है वो विश्व का नेतृत्व करे. हम मूलतः इस बात पे बात कर रहे हैं. देखिए, ऐसा है कि वो बड़ा एक स्वाभाविक है जो है कि जो भारत जो है वो विश्व का नेतृत्व करेगा. उसका बड़ा एक मूलभूत कारण ये है कि दुनिया के दो सबसे बड़े देश जो हैं, एक चीन और एक भारत. अगर आप आज के संदर्भों में देख लें कि बाजार की दृष्टि से या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देख लें, भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है.
चाइना में जो है हम जानते हैं कि डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन रेजीम है। तो पूरी दुनिया जो है वो चीन को लेकर, और खासकर कोविड के दौरान जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रही और जिस तरीके से चीन के स्पाइंग नेटवर्क सब कंट्रीज में सामने आ रहे हैं, तो दुनिया चीन को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। दुनिया भारत को लेकर कंफर्टेबल है और उन्हें लगता भी है कि जो है ये भारत की सदी है। एक अच्छी चीज ये हुई है कि आवर फोकस हैज कम बैक ऑन द गवर्नेंस इश्यूज, और हमें बहुत जल्दी जो है, अभी तो सिर्फ करवट ली है भारत ने जो है, तो इंडिया इज लाइक एन एलिफेंट बेसिकली, ठीक है ना। तो थोड़ा उठ के घूमने में, इधर उधर होने में समय लगता है, लेकिन जब करता है तो उसकी धमक ऐसी होती है कि धरती हिलती है। तो भारत अभी जो है वो उठ के अभी थोड़ी सी करवट ले रहा है। इतना बड़ा देश है और किसी देश के जीवन काल में 10 साल, 20 साल, 50 साल कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं जो है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक भारत की स्वाभाविक परिणति है। ये अभी तक नहीं हुई थी जो है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं जो है, लेकिन अब एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दैट। और पूरी दुनिया के लिए भारत एक स्वाभाविक चॉइस है, हम विश्व का नेतृत्व करना चाहें या ना करना चाहें, ठीक है ना। लेकिन दुनिया जो है वो देखिए, भारत की स्थिति बस एक छोटा सा एनेक्डोट करके, क्योंकि संडे की सुबह है तो सब लोग ज़्यादा गंभीर ना हो जाएं। भारत की स्थिति देखिए अब ऐसी हो रही है दुनिया में कि एक मोटा सेठ था, मोटे थे बहुत सेठ साहब, तो वो एक ट्रेन में चढ़े। तो ट्रेन में चढ़े, उन्होंने कहा कि मैं तो अगले स्टेशन पे ही उतर जाऊंगा। तो अगले स्टेशन पे वो जैसे ही उतरने लगे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ ने उन्हें धक्का दिया और वो वापस डिब्बे के अंदर चले गए। फिर अगले स्टेशन पे उतरने की कोशिश उन्होंने की, फिर अगले स्टेशन पे, हर बार यही होता था, भीड़ आती थी, उन्हें धक्का देती थी और वापस पहुंचा देती थी। तो वो अंततः जो अंतिम स्टेशन था उस पर उतरे। तो भारत की स्थिति उस मोटे सेठ की तरह है। भारत अगर नीचे आना भी चाहे तो दुनिया उसे धक्का दे के वापस जो है वो पहुंचा देगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मुझे लगता। ठीक है अरुण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और सच्ची में पूछो तो उनकी डेफिनेशन भी यही है कि सुपर पावर्स आर स्टेट्स so influential that no significant action can be taken by the global community without first considering the positions of the superpowers in the issue. So what जो आप कह रहे हैं वो सही है, हम भी शायद वहाँ पहुँच ही रहे हैं, बट पहुँचने में बहुत लंबा रास्ता है। और ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन नहीं है, वर्ल्ड बैंक की, बाकी इकोनॉमिक फोरम्स की प्रेडिक्शन है, एंड द predictions are very much predicting India to achieve that status by 2050, maybe by 2070, but there are many pitfalls on the way, and maybe Kasturi will be able to tell us what are the pitfalls that she identifies. I believe there is the biggest pitfall. It might sound a little odd, being from the community of journalists, that like we are very selective in appreciating a government's work. I think that's the biggest pitfall for India rising, or to take India to a level where it actually draws more, like the first question you asked me, less of hype and more of work. I think it's the responsibility of everyone in the country to be understanding the dynamics, to understand what's really happening, and not to go by a section of people who are trying to be very selective in saying a good thing about a good thing and a bad thing about a bad thing. Let's not be selective. As a professional journalist, I believe that this is one of the biggest pitfalls, when not recognizing the good and not recognizing the bad. We decide our course of action saying that this is something done by this person, so this is bad. It can't be good. So I believe that's the number one pitfall. And second pitfalls, yes, as Arunji said, that it's just started. किसने किया, क्या किया, वो important नहीं है. When India has started growing, if I talk like the students here, the image building is something which has been talked about a lot. अगर मैं ये students की बात बोलूँ, are they not proud when they see the India hosting G20 successfully? Or are they not proud to see that what command the supreme leader of the country sees when he goes across to nations at various conferences, the kind of power that India is being bestowed with, the kind of prestige India is being bestowed with? Are we not all proud about it at some point or the other? It's the critics only who talk about, the flip side of it. But this is not something that it's not something which is healthy. Okay, so you mean to say that we are not recognizing the government enough for what they are doing, and not
being appreciated enough and only trying to find faults. I'm saying we are being very selective. Okay. But I personally also feel that as necessary as it is to appreciate, it is also equally necessary to point out faults, and there should not be an element of fear in doing that, which somehow seems to exist today. Tuhin, what advantages, I'm going the other side now, what advantages does India have going forward that will ensure that we achieve our aspirations to be a global superpower in inverted commas, since we don't like the word and we are discussing it? So what are the advantages? I like the word. Vishwaguru is equally a beautiful word. Superpower is equally a beautiful word. I was going through some data. In the last 20 years, in the last 2 decades, 80 crore Indians have, got access to electricity. So imagine the kind of human capital we are creating for the future. Those who were completely out of, the access to basic necessities, the kind of empowerment that we have created among our vast chunks of population. So today, our population is at strength. Our population is our strength because as it is, the rate of growth of the population is diminishing, and post 2047 it should actually decline if you go by some of the reports that we have. But the key difference between China and us is that democracy woven into this population and the empowerment that the present population is witnessing takes us to another level. So India is the place to be. I think, sir, you mentioned a certain definition, about a superpower being able to hold a certain sway in the world. Now, I will give you a few instances of the last 4 or 5 years. Who would have thought 10 years ago that we will be able to abrogate Article 370 and the world will more or less endorse it, or the world will more or less be fine with it? Who would have thought that Saudi Arabia would be one of our key strategic partners, with the result that Pakistan stands isolated today, even in the OIC. So these are, exemplary strategic moves to ensure a certain vantage position for India in the years to come. And I think, so some of our achievements in the last few years very much corroborate that we could very well, be a superpower. I think it's all in the mind, and I think we are a superpower. Fine, so let's come down to some hard facts and some hard figures. We are on our way to being a superpower. There's no doubt about that. Whether we make it by 2050 or by 2070, there are a lot of factors that are going to determine that. प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ये है कि हम लोग चैंपियंस बन जाते हैं मैच होने से पहले, जो कि अभी वर्ल्ड कप में हुआ, और यहाँ पे भी हम लोग चैंपियंस बनना चाहते हैं वहाँ पहुँचने से पहले. कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अभी टुहिन ने मेंशन किया था कि हम लोग वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ विथ अ GDP of $3.73 billion. Okay, the largest, the United States of America is $27 billion. बीच के 3 को मैं छोड़ देता हूँ. पॉपुलेशन उनकी हमसे 1/4 है और GDP उनकी हमारे से 8 times है या 9 times है. ठीक है. सो पर कैपिटा GDP जो है आज की तारीख में पर कैपिटा $80.41 for the US and $2.61 for India. It is a long road to cover, and I'd like to ask Arun bhai, what impediments and pitfalls are we likely to face that may threaten to make this dream just a pipe dream? देखिए, मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि हम लोग सब ये चाहते हैं, 2 चुनौतियां. एक तो पहली बात ये है कि हमारे यहाँ सब लोग चाहते हैं कि शिवाजी होने तो चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में. मैंने कहा हमारे यहाँ सब कहते हैं कि मतलब हर घर में शिवाजी होने तो चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में. ठीक है ना. हम लोग खुद जो है वो कुछ नहीं करना चाहते. देखिए, सारी राजनीति, सरकारें किसी भी समाज के अंदर स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकती हैं. ये राजनीति का कैरेक्टर है. सरकारें और राजनीति समाज का एक सब फंक्शन होती है. समाज उनका सब फंक्शन नहीं है.
आप जब तक अपने समाज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, तब तक देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट यू कैन फ्रिटर अवे द गेन्स। हमने 5,000 10,000 साल जो भी हमारी पुरानी सभ्यता थी, उसमें हमने इतने गेन्स किए, उसके बाद हमने 1,000 साल की गुलामी झेली। क्यों झेली? बिकॉज आर सोसाइटी वॉज नॉट अप टू द मार्क। जो है, कोई रेजिस्टेंस होता रहा, बड़े शौर्य और पराक्रमी लोग भी थे जो है, जिन्होंने की रेजिस्टेंस किया। नहीं तो हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जो अदरवाइज जहाँ पे भी इस्लामिक या क्रिश्चियंस जो है वो इन्वेडर्स गए, कंट्रीज 100 की 100% जो है तब्दील हो गई जो है उसमें। तो देयर वॉज अ हीरोइक रेजिस्टेंस विच वेंट ऑन। बट समाज, ये जो दिक्कत है ना कि हर काम सरकार करेगी, ठीक है ना, ये मुझे लगता है ये जो एटीट्यूड है जो है, इस एटीट्यूड, ये एटीट्यूड सबसे बड़ा जो है संकट है कि हर काम, मेरी गली में भाई कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो मैं ही उठा लूं यार उसको, जो है 4 लोग मिलकर उठा लें जो है। या मेरे घर के आसपास जो है कोई बस्ती है, कोई स्लम एरिया है जो है, कोई मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग रहते हैं, तो भाई मैं उनका ध्यान कर लूं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सरकार उनको सब्सिडी दे, सरकार ही उनका ध्यान करे। सरकार तो करेगी जो करना है सरकार को जो है, और सरकारें ऐसे ही चलती हैं सब जगह पे। और फिर जब आप सारी चीजें सरकारों पे छोड़ देते हो, फिर सरकारें आपके सर पे सवार हो जाती हैं, और फिर आप कहते हो कि सरकारें हमारे सर पे सवार हो गई हैं। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हालांकि पूरी दुनिया ये कहती है कि जो हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, पर मुझे लगता है कि अभी भी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। उसको ठीक करने की ज़रूरत है हर लेवल पे, क्योंकि एजुकेशन का जो आपका टारगेट है, स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी लाइफ का लक्ष्य करियर बनाना नहीं हो सकता। करियर इज ओनली ए पार्ट ऑफ दैट। पर हमारे यहाँ पे ये है कि जो बच्चा जो है, जिसको पता है भाई मैंने 9वीं क्लास से जो है IIT करना है, उसके बाद मैंने MBA करना है IIM से, उसके बाद मैंने 2 करोड़ का पैकेज लेना, वो सॉर्टेड है। जो आदमी ये कह रहा है कि नहीं मुझे जाके कुछ समाज के लिए करना है, कुछ वो करना है, उसको बोलते हैं यार इसका दिमाग खराब है। तो ये जो प्रायोरिटीज हैं, हाउ वी आर यू नो, एक छोटा सा उदाहरण दे के बस बात अपनी समाप्त करूंगा। हम सभी जो भी पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने उनके साथ ये बात की होगी। आई एम माई सेल्फ अ पेरेंट। तो मेरा बेटा जब 6ठी क्लास में था, तो मैं जैसे सबसे पहला सवाल हम ये पूछते हैं बच्चा क्लास में आते हैं कि तेरे साथ कौन बैठता है क्लास में, ठीक है ना। तो बच्चा कहता है कि फला बच्चा बैठता है। कैसा है पढ़ाई में? नालायक है मान लो, ठीक है ना, मतलब बहुत खराब है। तो अगले दिन हम स्कूल जाते हैं उसके, और ये कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को ना किसी होशियार बच्चे के साथ बिठा, और उसको भी कहते हैं नहीं बेटा तूने नालायक बच्चे के साथ नहीं बैठना, तूने होशियार बच्चे के साथ बैठना है। तो आप अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं? आप समाज में ये संस्कार दे रहे हैं कि बेटा जिंदगी में कभी भी अपने से कमजोर की मदद नहीं करनी, अपने से जो मजबूत आदमी है ना उसके साथ बैठना है, उसकी मदद लेनी है, ठीक है ना, और आगे बढ़ना है। मतलब वो जब जब आगे बढ़े हैं हमारे कंधों पर चढ़े हैं, इस भाव से हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, और वही फंडामेंटल भाव हमारे समाज का। तो ये मुझे लगता है कि ये कोर है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Thank you, Arun. Health, education, these are the 2 things you mentioned which are likely to be pitfalls. I believe poverty is something that you want to hint at. Yeah. That is definitely one of the things, one of the pitfalls, because this is my last question when you asked so me. that was what I was coming to. Yeah. Poverty cannot be eliminated by giveaways that are being announced by all parties, whether it's at the state level or at the national level. By giving away big chunks of money for non-productive expenditure, you're going to affect your GDP negatively, and you're going to affect your road to becoming a superpower. And Kasturi, I have this last one question for you. What is the importance of women in achieving this global superpower status? It's immense. What are the constraints on the contributions that women can make in realizing this ambitious dream? It's immense. Because I believe that everybody is equal, if you want to stress on that. Women also play an integral part. See, we don't include housework in the GDP, right? But they are equal contributors. So if I talk about women's empowerment, we recently had the Women's Reservation Bill. But as usual,
It'll take its time. By the time the delimitations happen, and it starts showing its impact. But coming from Odisha, I can see that, like Odisha is, I think, one of the topmost states which has ensured, the reservation for women in a very big way. And that is already reflected in its work culture, the SHG culture that's going up, and the number of women who are performing extremely well. But here, when you talk about the country, as Arunji has said, that, it's always not the responsibility of the, central government or people in power to do it when you have different political parties governing different states. We have different elections. We have different political parties taking over different schemes in their own states, and how they manage it, how they combinedly work to, just because Odisha has a reservation for women, which is reflecting in its assembly seats and panchayat polls also, to reflect it in nationally also, it will take a big time, because even this year when we are giving a go-ahead to the Women's Reservation Bill to show its impact, I think it would take another 10 to 15 years to have it done. But yes, as far as, and one bright example is that of the President of India, Draupadi Murmu, who was elected the President. I mean, that's just not an indication. Let's not say that she's just an indication of women empowerment. She's a big example of how, the government trusts its women, trusts people from the marginalized community to take over as the head of the country. Thank you. Here are some facts. India's female labor force participation has risen to just now recently to 33% after the COVID pandemic. That is the labor force participation. Their contribution to our GDP is only 18% while constituting 48% of the population. Thus, simply bridging the gender gap in employment could raise our GDP by 30% is what they say. And finally is the wage gap problem, women being underpaid for the same job. All these things, if bridged, can contribute to the GDP in a big way. I think we're coming close to the last 5-6 minutes. So before we go ahead, are there any questions from the audience, from any one of us? So everybody seems to have understood everything very well. There is a question? Yeah, please. First of all, thank you very much for enlightening us how the economy is going forward. But my question is that more people are given free food under national securities. Can't we increase their income level so that they can buy their food on their own? And I think that will be more empowerment. Thank you. Well, I appreciate your, opinion. It's just that sometimes in politics, it's important to merge a lot of things together. And what I can tell you at this point of time is that in the last few years, unlike in the past where benefits to the poor would never reach them, 25 lakh crore worth of benefits, money, has actually reached the accounts of the beneficiaries through our DPI. At this point of time, if any party is going overboard beyond this, then it is very clearly an attempt to perpetrate a scam like they do, which is what has happened in Karnataka, where there is no money to pay the salaries of government employees, which is what has happened in Himachal in the last 1 year, which is what has happened in Rajasthan in the last 5 years. So I think, yes, there needs to be a balance between empowerment through money transfers and the way ahead, which, hopefully you will see post 2024 polls. I'll just add to it. I'll give you one example from Odisha again. Like 2005, Odisha government started giving ₹1 rice. And after that, you won't believe the Narega scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, people do not want to work anymore. So they are very happy with the ₹1 rice and they're happy to vote.
right? So that is a reason why if you are just trying to lift them to a certain level and then stop it and ask them to work, they don't want to come to work again. So our MG Narega scheme is actually falling flat. We don't have people who are completing enough man days. So rupee 1 rice, I think, is one of the most, is a bane for a state because it makes people sit at home. But it's not with this agenda that any government comes with a scheme. They come with a purpose. Not only for vote banks, but they come with a purpose. But the purpose is not utilized properly by the people who only get stuck to the amount they get. They get free rice at home. Why would they work? They don't get paid on time in Madras. There are instances, I agree with you. Yes. I have, even farmers are, misregistered. So there are instances of those kind of instances have been there since ages and they continue even today. It's not something which is cropped up now. I'll just add, मैम, देखिए जब ये फ्री राशन स्कीम की घोषणा हुई थी उस वक्त एक कहर था पूरे देश में, कोविड पैंडेमिक, हमें नहीं पता था कितने लोगों की जाने जाएगी, कितना लंबा ये चलेगा. थैंकफुली वी मैनेज टू डू इट वेल. एक बार जब जनता को ये आदत हो जाती है तो वो धीरे धीरे हटाना जो है, मतलब लाइक वी हैव टू बी सेंसिटिव टू देयर फीलिंग्स ऑल्सो. तो आज जिस मात्रा में मिल रहा है वो कम हो गया है. मैं घूमता रहता हूँ तो मैं भी किसी से बात कर रहा था जिसको मिलता है, तो आज मेरे ख्याल से 3 kg पर पर्सन पर चावल मिलता है और 1 kg गेहूं मिलता है. ये इससे पहले शायद 5 kg था. तो मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे जाएगा. लेकिन लाइक आई सेड, जब आप उस वक्त जो 2-3 साल थे कोविड पैंडेमिक के लिए, ये एक बहुत बड़ा उनके ऊपर एक समर्थन था, उनके लिए एक सपोर्ट था, जिन्होंने उनको महफूज रखा, सुरक्षित रखा गरीबी से. मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ये ऐड करना चाहता हूँ, ये कभी ख़त्म नहीं होगा until and unless you transform from a welfare state to a welfare society. हम समाज में जब तक अपने आसपास के लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, जब हम रखना शुरू कर देंगे तब सरकार के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर नहीं होगा, अन्यथा ये पॉलिटिकल कंपल्शंस रहेंगी. तो इसका एक ही सॉल्यूशन है जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेलफेयर स्टेट टू अ वेलफेयर सोसाइटी. True, very true. So friends, the millstones that we have identified that are going to maybe hamper our progress to the superpower status, again in inverted commas, are health, education, subsidies, and finally population. So it's all not bad. Let me just read out some predictions from authorities around the world based on annual projected GDP growth rates. Based only on annual projected GDP growth rates of many nations, in spite of all these negatives that we have, many international financial analysts are projecting India to be the 3rd largest economy in the world by year 2050, and the 2nd largest economy by the year 2070. So it's all good, but we have to take care of the pitfalls beyond which we will not be able to meet these targets set by the international world for us. And with that, let me thank Tuhin, Arun, Kasturi for a very nice discussion. There is one more question. Yeah, please. So as you say that India is a superpower. Not, it is. The World Happiness Index is very low as compared to other countries. Okay. Okay. Okay, who would like to talk on the happiness index? भाई मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया. तुम क्यों गंभीरता से ले रहे हो उसको? अरे पर मैं कह रहा हूं, तुम उसे गंभीरता से क्यों ले रहे हो मेरे भाई? हर चीज जीवन में नहीं, देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सुनिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं. मेरा मानना यह है, मैं उसे गंभीरता से नहीं लेता हूं. आप अगर उसे गंभीरता से लेना चाहते हैं तो मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है.